Good morning, students. I welcome you all in this English session of Standard 10th. We were doing with lesson number 1.4, that's a poem, All the World is a Stage, by the famous poet William Shakespeare. In the last lecture, in the last class, we have done with the workshop of lesson 1.4. We have finished with 6 activities of the poem, and now we'll be starting with the 7th one. The 7th one is the poem is entirely metaphorical. यानी इसमें बहुत सारे मेटाफर यूज़ किए हुए हैं. हमको ये सारे मेटाफर कंपेरिजन्स जो पोएम में किए हुए हैं वो यहाँ पे बताने हैं. वर्ल्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टेज. एक्टर्स आर कंपेयर्ड विद द प्लेयर्स. बर्थ एंड डेथ इज कंपेयर्ड विद एंट्रांस एंड एग्जिट. स्कूल बॉय इज कंपेयर्ड विद द स्नेल. द लवर्स साई इज कंपेयर्ड विद द फर्नेस. Spotted leopard is compared with a bearded soldier, and the last stage, that is the old age, is compared with the last scene. So these are the metaphorical comparisons used in the poem. Coming to question number 7b is pick out from the poem 2 examples of each figures of speech. Figures of speech के नाम वहाँ पे हमको दिए हुए हैं. Simile, onomatopoeia, alliteration, metaphor, inversion, transferred epithet. So we have to just give 2 examples of each of these figures of speech. So just search out these figures of speech in the poem. We will be searching these figures of speech in the poem. The first one is simile. Simile में हम देखते हैं कि direct comparison होता है. Creeping like snail. This is the example of simile. And second example is bearded like the pard. ये 2 examples हम simile के लिए लेंगे यहाँ पर. Then we have onomatopoeia. Onomatopoeia में क्या होता है? किसी भी साउंड का इंडिकेशन होता है. साउंड वाले वर्ड्स यूज होते हैं उसमें. सो हियर यू कैन हैव दिस लाइन, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म. देन अदर वन, जस्ट नेक्स्ट लाइन, देन द विनिंग स्कूल बॉय with a satchel. These are the 2 examples of onomatopoeia. Alliteration, there are number of examples of alliteration. You can take any of them. They have their exits and entrances. This is the example of the first example of alliteration. Exits and entrances. E is sound of letter E is repeated. You can even take the next line, and one man in his time plays many parts. Plays and parts, sound of letter P is repeated. ऐसे बहुत सारे examples हैं यहाँ पे poem में. You can just take any 2 of them. Coming to the next one, that is metaphor. Metaphor पूरे पोएम में यूज़ किया हुआ है. विल जस्ट टेक द फर्स्ट 2 लाइन्स. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. वर्ल्ड को स्टेज से कंपेयर किया हुआ है. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स. ये दोनों भी यहाँ पे मेटाफर हैं. सो यू कैन टेक दीज 2 एग्जाम्पल्स फॉर मेटाफर. देन यू हैव इन्वर्जन. इन्वर्जन में फिर से एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. ये जो हमने alliteration में एग्जाम्पल लिए थे, यू कैन टेक दैट सेम एग्जाम्पल हियर. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इन्वर्जन. और इन्वर्जन का इस पोएम में एक ही एग्जाम्पल है. बाकी सभी फिगर ऑफ स्पीच के 2 एग्जाम्पल्स हैं. सो देर आर नो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्जन इन द पोएम. ओनली वन इज गिवन हियर. एक्चुअली द करेक्ट प्रोज ऑर्डर शुड बी एंड वन मैन प्लेज मेनी पार्ट्स इन हिज टाइम. दैट शुड बी द करेक्ट प्रोज ऑर्डर. लेकिन यहाँ पे प्रोज ऑर्डर अलग लिखा हुआ है. एंड सो दिस इज inversion. The last figure of speech we have to find out is transferred epithet. Transferred epithet में क्या होता है? Adjective एक person से, एक चीज़ से दूसरे चीज़ों पर ट्रांसफ़र होता है. So here you can take this example, sighing like furnace with a woeful ballad. यहाँ पे woeful ballad को कहा गया है. Actually woeful यानी sad जो है वो poet है जो लिख रहा है उसको, ballad को. So this woeful adjective is transferred from the poet to the ballad. So this is transferred epithet. Transferred epithet का example है ये. Next अगर हम देखेंगे example इसका, into the lean and slippered pantaloon. Lean and slippered यानी पतला सा ढीला सा उसका पैजामा है person का. That is what the poet is telling us. Actually this person, पैजामे का साइज़ वही है, पैंटलून का साइज़ वही है. Actually he has gone slim और इसलिए वो लूज दिख रहा है. So this lean and slippered are the adjectives transferred from the person to the pantaloon. Hence this is also
transferred epithet. So these were the examples of the different figures of speech. I have listed them here with all the examples. You can refer here and note down all the figures of speech examples अगर आपको poem में थोड़ा सा confusion है तो. I have shown you all the examples from the poem. यहाँ पे clearly लिखे हुए हैं. सिर्फ inversion में आप देखेंगे कि एक ही example है. I have left the second one blank because there is only one example in the poem. Next, question number 8 you have is omitted for this year from the course, and directly we will jump to question number 9. Question number 9 is read the poem again and write an appreciation of the poem in a paragraph format. पैराग्राफ फॉर्मेट में हमको पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है. इसमें पॉइंट्स के लिए आपको बताया है पेज नंबर 5 पे रेफ़र करने को. पेज नंबर 5 पे जो पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं वो है कि नेम ऑफ द पोएट होना चाहिए, पोएम होना चाहिए, नेम ऑफ द पोएट होना चाहिए. दोनों के लिए हाफ मार्क है. देन यू हैव द राइमिंग स्कीम के लिए मार्क्स हैं 1 मार्क. देन यू हैव फिगर्स ऑफ स्पीच एंड फाइनली यू हैव द थीम ऑफ द पोएम फॉर 2 मार्क्स. ऐसे 5 मार्क की आपकी एप्रिसिएशन है. सो let us write the appreciation of the poem. All the World is a Stage by William Shakespeare. First you will mention the title. The title of the poem, the words all the world is a stage are actually taken from William Shakespeare's play As You Like It. With these words begins the monologue by a character in Act 2 of the play. Shakespeare has been known as a great playwright and poet of this era. So this is the paragraph explaining about the poem, name of the poem as well as the poet. सिंपल इसमें भी आप लिख सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो दैट द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड इट इज़ रिटन बाय द फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर. सिंपल वे में भी आप लिख सकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट हमारा होता है फिगर्स राइमिंग स्कीम. Here you see in this poem Shakespeare uses lines with a steady rhythm of 5 beats in each. यानी 5 beats के बाद में सेम रिदम यूज़ हो रहा है एंड राइमिंग वर्ड्स कोई भी नहीं है इसमें, राइमिंग स्कीम कोई भी नहीं है. एंड देयरफॉर दिस हियर विल से दैट दिस पोएम हैज़ नो राइमिंग स्कीम बट द पोएम हैज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन द रिदम एंड इट इज़ हैविंग अ स्टेडी रिदम ऑफ 5 beats. ये है राइमिंग स्कीम के बारे में पैराग्राफ. अगेन आई एम टेलिंग यू इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट सिंपल वेज में लिख सकते हैं आप इसको कि दैट दिस पोएम हैज़ नो राइमिंग स्कीम, इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. देर आर 2 मेजर पोएटिक डिवाइसेज यूज इन दिस पोएम, सिमिली एंड मेटाफर. 2 मेन जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की हुई है वो सिमिली और मेटाफर है. एग्जाम्पल्स अभी हमने किए, उसमें से 2 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सिमिली इज क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, देन सोल्जर्स बेयर्ड लाइक द पार्ट. ये 2 एग्जाम्पल्स सिमिली के हैं. मेटाफर के एग्जाम्पल्स भी फर्स्ट 2 लाइन्स हमने दिए थे. द एंटायर पोएम इट सेल्फ इज लाइक symbolism. Men and women are portrayed as players whereas life is portrayed as the stage. इसके अलावा सिमिली और मेटाफर के अलावा repetition is also figure used in the poem. Words like sans, age, etc. are repeated. और भी इसके अलावा बहुत सारी figures of speech यूज़ की हुई हैं. alliteration, inversion, transferred epithet, onomatopoeia. You can just list out these names also here. Coming to the last point, that is the theme of the poem. A theme of the poem, if you remember, we have written this central idea or theme in question number 6A. तो जो question number 6A था हमारा, उसी का ये आंसर 6A का हमने theme में डाले हुए हैं. That is the central idea of the poem. So this was all about the question number 9, that is appreciation of the poem. Here we end up with this lesson as well as this lecture, and that's all for today. Thank you. Have a nice day.